understanding SWOT into a different perspective, which is known as TOES. I think ये भी हमने PCVS फर्स्ट में किया था, आपको TOES एनालिसिस भी बताया होगा सर ने, Yes, बताया ma'am. था क्या, है ना? So what is Yes. the abbreviation for TOES? What is the abbreviation for TOES? The threat opportunity stuff. Weakness and Threat, opportunity, weakness, Weakness. and strength. Okay, and this TOES analysis, what it says is the SWOT analysis is a inside out approach. Inside out approach. As strength is our inside strength, weakness is our inside strength. So SWOT always takes us from inside out, and TOES approach will give you outside in approach. First, think about threats. क्या क्या तकलीफें हैं आसपास, लेकिन ये भी देखिए what are the opportunities in the market, what are the opportunities around us. Also look into your weaknesses, that you cannot cope up with these opportunities, and you can be like gone because of these threats, but still you have to focus on your strength. Okay, so TOES analysis and SWOT analysis, both the abbreviation is of course the same, you know, strengths, weaknesses, opportunities, threats, but these two approaches are outside in approach and inside out approach. In case of general course of action, of course, SWOT analysis is very, very useful to analyze, to take any decision, to come to any conclusion. This is of very, very useful thing, that is inside out approach. But nowadays, in this particular era, we cannot very much rely on inside out approach. मेरे पास ये है, मुझे ये चाहिए, मैंने ऐसे करना है, that is how I'll just analyze what are the opportunities around us and I'll just find out and take the decision. So inside out approach एक जनरलाइज अप्रोच है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एग्जीक्यूट की जा सकती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में इम्प्लीमेंटेबल है, बट इन दिस एरा outside in approach is more precise, and we are actually executing this TOES approach right away instead of implementing SWOT approach. How? Why? Because this particular world that we are working in, we have to first analyze our world and formulate our uh, SWOT according to this particular word, and that is the reason our SWOT becomes TOES. बाहर की चीजें हम पहले एनालाइज करते हैं, and then we come up to ourselves and we learned a lot. You'll be surprised that is you are exactly executing TOES in this environment in the form of VUCA world. Do you know? Do you know what is VUCA world? Ma'am, hookah, the word or the thing that you. Ma'am, by the way, there are students that will join in late because they have gone to this cultural committee meeting. कब थी कल्चरल कमेटी की मीटिंग? मैम अभी 11 बजे. अभी शुरू की थी क्या? हाँ, yes मैम, 11 बजे ने शुरू करी है. सोनाली मैम is taking it, I think, and they will join a little late. Few students only. Just a minute, hold.
Yes, thank you, Anshul, for reminding me about this cultural meeting. It is going on, and even rest of the students who want to go for it, you can go. But all the concrete decisions will be taken on a common platform, and I will be posting the message about it soon in your all the groups. So the decision regarding student council and all the committees will be taken soon on a common platform with equal participation of all the students and all the faculty members. Okay. Ma'am, are only the committee members supposed to attend, or also the club heads and all that stuff? When अभी In this meeting, huh? in this meeting, अभी जो meeting चल रही है उसमें, Yes, ma'am. okay. In this meeting, if you want, even everybody can attend. पर उस meeting में अभी बहुत कुछ concrete decisions होने वाले नहीं हैं. वो decision हम लोग सभी एक साथ मिलके ही लेने वाले हैं. See, Student council. यहाँ पर जिन लोगों ने ना फॉर्म में कमेटी भरा नहीं है वो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते, ऐसा उन्होंने अभी ये वाली मीटिंग उन्होंने क्या बोला है कि जिन्होंने मतलब फॉर्म में कमेटी मेंबर के लिए सिलेक्ट नहीं किया ना वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब फॉर्म तो भरा है लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट सिंगिंग वो सब भरा है, अगर कमेटी मेंबर नहीं भरा है तो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, ऐसा कह रहे हो। उसमें अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी डोंट वरी अबाउट इट उस कमेटी का फॉर्मेशन फिर से होने वाला है एक्चुअली स्टूडेंट काउंसिल का ही फॉर्मेशन होने वाला है एक 30 तारीख तक का समय छोड़ देना पड़ेगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में मोस्टली 3-4 अक्टूबर को ये वाला काम करने वाले हैं हम 3 से 4 अक्टूबर और उसका अनाउंसमेंट काफी पहले मैं अभी दे रही हूँ so that you can participate for being in the council काउंसिल मेंबर के लिए आप लोग अपना नॉमिनेशन दे पाएंगे एक कमिटी आपका इंटरव्यू लेगी उस कमिटी में काफी फैकल्टी मेंबर्स होंगे ऑलमोस्ट सारे मेजर फैकल्टी मेंबर्स होंगे एंड देन विल फॉर्मुलेट दैट कमिटी सो दिस प्रोसेस विल बी डन क्योंकि अभी कॉलेज में अभी ही 5 क्लासेस हैं और आगे और आपके जूनियर्स आ जाएंगे उसके बाद में 8-9 क्लासेस अभी जो ये कमेटी बनी हुई है और ये मेंबर वगैरह कर रहे हैं उस समय कुल कॉलेज 2 क्लासेस थी 80 स्टूडेंट्स थे जस्ट अ मिनट टाइम so okay anyways so it is really थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ ही हुआ है और ऑनलाइन होने की वजह से वो डिसीजन समय पे एंड प्रॉपर नहीं हुए हैं बट विल डू इट एंड each one will be having equal possibility to be in the committee member in the committee student council के मेंबर होने का आपके पास में इक्वल राइट होगा and it will be done in a common platform and we will be sending नीचे प्रीति जरूर लिखा हुआ होगा आपको और उन्हीं मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे सो डोंट वरी अभी आप मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट मैं अभी जहाँ मीटिंग चल रही है सोनाली मैडम से बात करके आई anyways so is it clear any question about that no, ma'am. is it so we were talking about VUCA word is it
Anyone knows the abbreviation of VUCA word? No, ma'am. Anybody? No, ma'am. Is it? No. Okay. So now just listen and write down the abbreviation with your notebook. V stands for volatile. U stands for uncertain. Volatile, uncertain, complex. C stands for complex. And A stands for ambiguous. Okay. So this particular world, what we are working in is a VUCA world. VUCA world, that means it is very volatile. Today, whatever the situation is, कल को आपके यहाँ पे lockdown लग जाएगा, COVID आ जाएगा, and you are not at all prepared for it. It's very volatile. It is very uncertain in nature. It has become very complex. Online, offline का combination. We are coming from our home. तो हमारे लिए तो ये ऑफलाइन कॉलेज चल रहा है और यहाँ ऑफलाइन कॉलेज में आके हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं. सो दिस इज सो कॉम्प्लेक्स वर्ड. ओके, सो दिस इज वोलेटाइल, दिस इज अनसर्टन, दिस इज कॉम्प्लेक्स. आपको नहीं पता कॉलेज कब शुरू होगा, ऑनलाइन होगा लेक्चर, ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी. एन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन एन अनसर्टन decisions and uncertain questions you come across in this time. So this is very volatile, uncertain, complex and ambiguous. बहुत ज्यादा उस पर आप rely नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आप haphazard हो जाओगे. This is ambiguous word. Exactly the meaning, the experience, the implementation and everything you can very well see in this COVID situation, in this pandemic, what we all are experiencing since last 1.5 years. So this has given us a concrete experience of VUCA world. So we all are operating, we all are working on VUCA world. We never know हमारा handset कब ऑफ नो यूज हो जाएगा, कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उस टेक्नोलॉजी के चलते मेरा ये वाला मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा, जिसमें पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, पुरानी एप्स हैं और जितना इट इज नॉट वेरी मच कॉम्पिटेंट. सो वी कैन नॉट से दैट इज एक बार आपने हैंडसेट खरीद लिया तो अगले 25 साल तक आपको मोबाइल नहीं खरीदना पड़ेगा, अगले 10 साल तक आपको मोबाइल नहीं खरीदना पड़ेगा एंड सो ऑन. So this is the case of the external environment of a business, of an organization, of an individual, what we are living in. So this external environment is the term of this environment nowadays, when it is loaded with technology, it is loaded with ample of facilities, loaded with innovations and number of discoveries. The lifestyle has changed, the expectations have changed, ample of money is there in hands of everybody. They have more spending power with them. So all these factors come together and give birth to this kind of VUCA world, which is very volatile, very uncertain in nature, very complex in nature to understand, and ambiguous in nature to work in. And as an individual, it is a great challenge to operate ourselves in this very ambiguous world. And in order to operate in this ambiguous world, unless and until we do implement TOWS analysis instead of SWOT analysis and just thinking about what is my strength and my weaknesses and my opportunities, and it's not about you anymore, it's about the organization, it's about the environment which plays a vital role. And that is the reason you need to have outside in approach, and that is the reason SWOT analysis is no more a SWOT analysis. We need to consider TOWS analysis, outside in approach. I hope you could get the gist of SWOT. Of course, you know it right from your first semester. TOWS, it's not just the reverse of it, but the exact implementation of SWOT analysis can be done in this VUCA world in the form of TOWS analysis, wherein first of all, analyze your environment,
because it is very VUCA type of environment. So analyze it, find out the threats first of all. लॉकडाउन है, बीमारी लग सकती है, आपका वैक्सीनेशन हुआ है क्या, and all such threats you need to analyze. You need to understand the opportunities that we have. Yes, opportunity is there, and we could experience a number of great opportunities in the form of such of online lectures, online platforms, webinars हो रहे हैं, knowledge sharing थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, travel time बहुत कम हो चुका है, रोड पे ट्रैफिक्स थोड़े कम हो चुके हैं, wherein I can just attend one webinar a day, I can attend almost 5 webinars a day. So the capacity of knowledge sharing has increased n number of times, but at the same time the focus span, the real experience of life, that human behavior, the psychology और उसकी understanding और उसका experience बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. So n number of things are there, and that is the reason nowadays you have to do TOES analysis. पहले बाहर के environment को analyze करें and then अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करें और उसके बाद डिसीजन ले. सो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में मैच कर रही हूँ, उसको सप्लीमेंट कर पा रही हूँ, दोज स्ट्रेंथ्स will be your strengths. You cannot only say this is my weakness, I cannot do it, I don't like to, this is my weakness, I cannot operate with this headphone and mobile phone. So आपकी weaknesses को आप बहुत ज़्यादा safeguard और protect नहीं कर सकते. आपको आपकी weakness को with education, with support system, with everything, you need to enhance your weakness and convert them into strength, and you have to come into offline. 2 साल पहले तक हम कह पा रहे थे हमें ऑनलाइन नहीं लेना आता, हमें मीटिंग नहीं आती, हमें जूम क्या होता है नहीं मालूम, ऑडियो वीडियो हमें नहीं ऑपरेट करना आता, बट दिस मे बी आवर वीकनेस, लेकिन दिस इज नो मोर आवर वीकनेस. समहाउ वी डू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ आवर कलीग्स एंड एवरीबॉडी. सो ये हम क्यों कर पा रहे हैं? Because this is VUCA world and we have to live in this VUCA world. There is no substitute of it. We cannot go anywhere. We can just understand the nature of this world, which is very ambiguous in nature, and that's how we have to just survive in it, using our strengths and converting our weaknesses into strength. So this was about today's session about how we can convert our SWOT analysis to TOES analysis and understanding of this VUCA world. Now, I want all of you to write one write-up. सभी लोगों को एक write-up लिखना है, and this write-up will be about this VUCA world. Okay. This write-up will be your real life experience. Okay. Of course, maybe आपके experience in lockdown period में same या similar आ सकते हैं, but still your writing skills, your expression of thoughts, your word knowledge, your sentence formation is your own. So you have to make this write up as your experience of VUCA world in this pandemic. I hope everybody has written the topic. The topic is you have to write your experience of VUCA world in this pandemic. Your experience of VUCA world in this pandemic. How come in this pandemic you come to know that this particular thing or any of the experience where you could have the feeling of uncertainty. कल तक तो रोज कॉलेज जाना था, आज से कॉलेज बंद हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है. So such uncertainty, when you could find, I need your experience and that too written in your words in a beautiful sentence formation as well. राइटिंग स्किल्स हम बहुत राइटिंग स्किल्स की तरह नहीं, इसी तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ सीखने वाले हैं. So I want all of you to take this next 20 minutes to have your notebook and pen being ready. Write your experience
on this VUCA world and post it on the group, it should not be a typed one, it should be a written one. हैंड रिटन लिखना है, उसका फोटो खींचना है और BCVS3 ग्रुप पे पोस्ट करना है और ये पोस्ट करना है आपको 12 o'clock तक. You are having a class 30 अभी 25 minutes का क्लास बचा हुआ है और उसमें आपको करना है. For I am taking the screenshots not with the laptop. So I cannot register your attendance right away, but I have taken the screenshots of all of you. And yes, of course, I want all of you to be present in our next class so that the same thing I can duplicate in your attendance. Am I clear? Any Yes, questions? ma'am. Clear है? अभी अगले 20 मिनट में आपको क्या करना है? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. सीखो, उसको पिक करो और ग्रुप में डालो. I'll be enrolling. Yes, wonderful, wonderful. At least आपकी तरफ से ये भी मिलता है तो लगता है आप लोग भी हो वहां पे. Yes, give me. Wonderful, wonderful. चलो, okay everybody, bye, take care, stay safe. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा, आज का आपका जो प्रैक्टिकल सेशन है तब तक तो आपका सभी का ये राइट अप आ जाना चाहिए. प्रैक्टिकल सेशंस हम नेक्स्ट वीक से और एक्टिवली लेने वाले हैं. दिस वीक फॉर प्रैक्टिकल सेशन विल बी योर writing your experience and posting on the group one. I'll be posting it on the group as. ठीक है? Yes, ma'am. चलो, bye everybody, take care, stay safe. Thank you, ma'am.